Hey, hi. Now in this video, let's talk about temperature. Okay, so to understand this concept, let's say अपने पास दो boxes हैं. Now in these two boxes, we have gas molecules. So let's say, ये जो पहला box है इसमें बहुत सारे molecules हैं. And then naturally they are not stationary. They are traveling, they are moving, they are bouncing around, they are oscillating, they are vibrating. They are not stationary. Similarly, हमारे पास एक दूसरा बॉक्स है जिसमें एकमात्र लावा हिस्सा एक मॉलिक्यूल पड़ा है. Okay, now let's go to definition. Now, what is the definition of temperature? Definition says कि boss, the temperature is the measure of the average kinetic energy. Average is the key point here. Alright, so now let's consider box number one. And you have, इतने सारे molecules है इसके अंदर. And then you say कि यार अगर मुझे इसकी average kinetic energy निकालनी है, I have to add up each and every individual molecule का kinetic energy and then मैं उसका average निकालूंगा. So let's say it comes out to be 100 joules, the average kinetic energy. Now let's go to box number 2 जहाँ पे बेचारा अकेला लावा हिस्सा एक मॉलिक्यूल भटक रहा है. उसका kinetic energy निकालेंगे and let's say it comes out to be again 100 joules. Now if someone asks me कि बॉस किसका टेम्परेचर ज्यादा है, the answer is कि दोनों का टेम्परेचर सेम है. राइट, व्हाई? बिकॉज टेम्परेचर का मतलब ही वो है that it's the measure of the average kinetic energy, but then it doesn't make sense. You will say कि यार यहाँ पे इतने सारे molecules हैं और यहाँ पे ये बेचारा लावारिस अकेला है. How is it possible कि दोनों का टेम्परेचर सेम है? So, to understand this, let's consider these two systems. Okay, so ये अपना system number one है, and this is our system number two. So let's say system number one is a box, and ये box के ये side बहुत सारे gas के molecules हैं, and these molecules are bouncing around, you know, and then they'll just bounce around and they will have some volume, they will have some pressure, and they will have some temperature. So let's say v1, p1 and t1. Similarly यहाँ पे we have another system, and this is a piston cylinder system. So ये हमारा piston है, ये cylinder है, and then there are many molecules of gas inside. Now for this system to be in equilibrium, we have some marbles. यहाँ पे बहुत सारे marbles है. अब ये जो marbles का weight नीचे जा रहा है is equal to the force of these molecules on the piston, and it makes sense कि for any system to be in equilibrium, forces should be equal and opposite. Alright, now what we do is imagine ये जो दीवार दिख रही है तुमको, ये हम निकाल देंगे. So let's say ये दीवार हम निकालते हैं. When we remove this wall, when we remove this wall, what will happen? If you remove this wall, ये जो gas molecule है, ये सब अभी spread हो जाएंगे because there is no wall now. पहले उन लोग टकरा रहे थे, अब उन लोग यहाँ जाएंगे and they'll spread. So when they spread, उनका volume increase होगा. So let's say थोड़े delete कर देते हैं. So let's say दो चार molecules चले गए and वो spread हो गए. Alright, so now the volume has increased, the pressure has decreased, so we have, ये दीवार निकालने के बाद अब volume हो गई V2, pressure हो गया P2 and temperature हो गया T2. And it makes sense कि यार अगर दीवार निकल गई, disappear हो गई, तो volume बढ़ गया because अब बहुत ज़्यादा room मिल गया उनको. सवाल ही नहीं उठते, volume बढ़ा. But the number of molecules are same. That means कि प्रेशर कम हो गया. एंड इट मेक सेंस कि यार अगर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और अगर जगह बढ़ गई तो प्रेशर उन पे कम होगा. What about temperature? So the question is कि what happened with temperature? What is the relationship between T1 and T2?
Okay, so this is our system number one, and now we have our system number two. So as we discussed earlier, कि यार, we had gas molecules, and then we had these marbles, and they were in equilibrium. Now what we do is हम ये जो marbles है वो निकाल देते हैं. जब हम ये marbles निकालेंगे तो ये जो system है it will look something like this. ये उसका ये उसका पहले का वॉल्यूम था, बट बिकॉज हमने मार्बल्स निकाल दिए हैं तो फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम ये जो पिस्टन है ये थोड़ा ऊपर मूव हो जाएगा. एंड इसके ऊपर जो मार्बल्स है वो कम हो गए हैं. ओके, पहले 15-20 मार्बल्स थे, अभी 4 ही बचे हैं. सो देयर इज अ वर्क डन. सो दिस इज द डिस्टेंस बाय व्हिच द पिस्टन हैज ट्रैवल्ड. एंड ये जो मेरे गैस मॉलिक्यूल्स है, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, इनकी वॉल्यूम बढ़ गई है. सो पहले इट वाज V1, P1 एंड T1. नाउ इट इज V2. सवाल ही नहीं उठता इसका वॉल्यूम बढ़ा है बिकॉज पिस्टन ऊपर मूव हुआ है. एंड P2 जो है वो कम हुआ. व्हाई? बिकॉज the volume has increased. So pressure has gone down, volume has gone up. But what about the temperature? So now we have two questions. What happened with system 1, with respect to temperature, and what happened with this system 2 with respect to temperature? Okay, so thoda time lo, thoda socho, pause karo video, and then come back to video. Okay, so just imagine कि ये जो molecules थे, it there was a wall here. एक दीवार थी यहाँ पे और ये दीवार अचानक गायब हो गई. तो जब ये दीवार गायब हुई उसके अंदर जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स थे वो सब स्प्रेड हो गए. एंड देन वी सेड कि बॉस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एज टेम्परेचर. नाउ इमेजिन कि इनकी अंदर की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है did it decrease or increase? What happened with it? The answer is there was no change. Why? Because it didn't do any work. Work का मतलब है that you push something. You have some force and you push that object. But in this case ये दीवार अचानक गायब हो गई. So because ये अचानक गायब हो गई, the gas molecules did not do any work. So the temperature is the same. यानी T1 is equal to T2. It's just कि यार एक दीवार थी वो गायब हो गई. एंड उसके अंदर जो गैस के अंदर जो एनर्जी थी इट इज स्टिल द सेम. खाली प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, एंड दैट्स इट. नाउ लेट्स मूव टू सिस्टम नंबर 2. सो एज वी सेड यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे एंड फिर हमने वो सब मॉलिक्यूल्स निकाल दिए तो इसका इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ा. नाउ एज द वॉल्यूम इंक्रीज्ड, वो वॉल्यूम बढ़ाया किसने? सोचने की बात है. ये वॉल्यूम बढ़ाया है ये मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी है उसने बढ़ाया है. इट डिड वर्क. And what was that work? That work was moving this piston from this position to this position. So the work was done. And if the work is done, then the energy in the molecules have to reduce. Because work करने के लिए energy चाहिए. And वो energy आई कहाँ से? ये molecules के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका इस्तेमाल किया है टू डू दिस वर्क. सो इफ इट डिड वर्क then the temperature, then the kinetic energy in the molecules have gone down. So if you do work you lose energy. And what is temperature? It's just the measure of energy. So if the work has been done, the energy has the energy in the molecules have reduced. And if the energy has reduced, the temperature has to go down. So in this case temperature T1
and T2 are not equal. Because this system did work, the molecules lost their kinetic energy and hence it reduced the temperature has been reduced. So T2 is less than T1. So I hope